दोस्तों हमारी उम्र में रिलेशनशिप में मुश्किल है थोड़ा परखना इंसानों को कि कौन लंबा साथ देने वाला है या कौन छोटे से बहाने का इंतजार कर रहा है साथ छोड़ने के लिए। अगर कोई लड़का आपकी गर्लफ्रेंड के करीब आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो प्रॉब्लम वो लड़का नहीं है, वो लड़की प्रॉब्लम। उस लड़के को फील कराया गया, जब तो वो लड़का इतने स्टेप्स आगे बढ़ा। आपकी गर्लफ्रेंड ने उसे फील कराया, आपके पीठ पीछे वो चीजें होती रही। किसी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन जब ही आता है जब कोई उसे आने देता है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए तो उस इंसान को जाने दें, क्योंकि हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता जिसे सब इंसान चाहिए होता है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। आज आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं, आपको लग रहा है अरे वाह क्या बात है मेरी तो किस्मत खुल गई है, वो अगले दिन आप कह रहे हैं कहां फंस गया। इस बात को अच्छे से समझ लो कि लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। आज आपको लगेगा इससे बढ़िया तो कोई इंसान ही नहीं, आपको लग रहा है अरे वाह क्या बात है मेरी तो किस्मत खुल गई है, वो अगले दिन आप कह रहे हैं कहां फंस गया। आपको नस नस में सुपरस्टिशन नजर आएगा। बड़ी जल्दी हम लोग किसी की भी साइड ले लेते हैं, क्या ये सुपरस्टिशन नहीं है? आजकल YouTube पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। बहुत सारे चैनल्स हैं जो फैक्ट्स बता रहे हैं, मतलब कहीं से भी कुछ भी पढ़ा, और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है कि अलग अलग जगह से पढ़ो और फिर पढ़ करके आपको बताओ अरे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, वहां पर जाओ, जा करके बताओ कि मेरे को किस टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च चाहिए, वो सारा करके आपको दे देगा। और आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है वाह क्या बात है, मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जिससे मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूं। इज नॉलेज इक्वल टू इंटेलिजेंस? कोई भी आकर के आपको कुछ भी बता रहा है, क्या उसको आप वेरीफाई करते हो या बस सुन करके उस इंसान से अटैच हो जाते हो और उस इंसान के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो? व्हाई डोंट वी यूज आवर ब्रेन? हम सबको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो जब उस पॉजिटिव आउटकम को अचीव करने का आपके पास में कोई क्लियर कट रास्ता नहीं होता है और उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वहां पर सुपरस्टिशन बढ़ता चला जाता है। वहां पर क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो इसका शॉर्टकट बताते हैं कि तुम्हें ये चाहिए, देखो मैंने ये किया था। स्पेशली अगर उसको आउटकम मिल गया है, मान लो पैसा कमाना चाहते हो, तो किसी ने आकर के आपको बोल दिया मैंने वहां पर जाने का रूटीन अपना फिक्स किया पिछले 3 साल से, और 3 साल पहले हमारी हालत बहुत ही खराब थी, आज देखो कितनी बढ़िया हो। अरे भाई वहां जो तुम जा रहे हो उसका तुम्हारी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन से क्या लिंक है? बट आप अननेसेसरी उसको कनेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही है जो हमारे छोटे छोटे सुपरस्टिशन हैं, जिसको सोच करके हमको लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, वो कह रही है ना मम्मी कर लो ना। अब आपने किया और आपको पॉजिटिव आउटकम मिल गया। अभी तक तो वो मम्मी का बिलीफ था, अब वो किसका बिलीफ है? आपका बिलीफ है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। रात को सोते समय शरीर को अचानक से झटका लग जाता है या फिर आपको ऐसा एहसास होता है कि आप गिर रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। इसे कहा जाता है हाइपनिक जर्क, साइंटिफिक प्रोसेस इसका नाम है मायोक्लोनस। तो होता है इस वजह से क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जागरूकता, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे अंदर गिर जाती है, जिससे आपको नींद आती है। लेकिन उस मोमेंट पे आपका शरीर जो है वो ये समझता है कि अब अभी एक्शन कर रहे हो, इस वजह से वो कॉन्शियसनेस को अंदर ड्रॉप नहीं होने देता है। फिर से बाहर लाने के लिए आपको झटका लगता है। आप कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी ले रहे हो और अगर गहरी नींद में चले गए, आपका शरीर आपको फिर से उठा देगा। इसे हाइपनिक जर्क कहा जाता है। अब स्पिरिचुअल लेसन ये है कि आपका जो शरीर है ना, ये आपको अंदर जागरूकता को गिराने नहीं देना चाहता, लेकिन ध्यान में हमको इसकी ही जरूरत है। तो हम जो मंत्र जाप करते हैं ना, वो एक साधन है जिसकी मदद से हम इस शरीर को भी उल्लू बना देते हैं और हमारी जागरूकता को अंदर की तरफ गिरा देते हैं। आंखें बंद करके आप धीरे धीरे मंत्र गा रहे हैं, ओम 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 ओम। आपके शरीर को ये पता भी नहीं चल रहा है कि आप जागरूकता को अंदर ले जा रहे हैं। और एक टाइम आता है जब ओम 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 करते करते आपका मंत्र बंद हो जाता है, आपका शरीर भी शांत हो जाता है और आप ध्यान में लीन हो जाते हो। इस वजह से मंत्र का यूज किया जाता है ध्यान में। ध्यान एक्चुअली मंत्र के बाद शुरू होता है। वो मंत्र जो जाप करते हो वो ध्यान नहीं है, उसके बाद ध्यान है। नमस्कार। हमको ये लगता है कि हम खुद सब काम कर सकते हैं। जवानी ऐसी चीज होती है, ये भी कर लूंगा, हाँ ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ठीक है कर लेंगे, लेकिन स्केल तेजी से करना है तो आप अकेले कैसे कर पाओगे? हाँ, गिवन इनफ टाइम, इन 100 years you will do everything, लेकिन तब तक क्या आप जिंदा नहीं रहोगे? राइट, इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। तो अगर आपको स्केल पे और तेजी से काम करना है तो एक तोड़ू टीम बनानी के लिए, तो वंस यू हैव द सीड कैपिटल, यू हैव टू अगेन गो आउट टू योर कॉलेज बैचमेट्स, you have to find people who have failed as entrepreneurs and looking for a second innings. वो जल्दी से आ जाएगी। कॉर्पोरेट वाला बंदा नहीं आएगा 50 लाख की सैलरी छोड़, वो मुश्किल है। और वो टाइप के लोग शायद आपके लिए सूटेड भी ना हो एट दैट
पॉइंट ही नहीं। जब आप मार्केट में बुक खरीदने जाते हो या Amazon या फ्लिपकार्ट पे बुक खरीदने जाते हो आप ऑनलाइन, तो बहुत ज्यादा महंगी बुक मिलती है, बट आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, बट क्या करें, पैसों की थोड़ी दिक्कत है। तो कोई भी बुक, कैसी भी बुक, कितनी भी महंगी बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में। तो मैं आपको 2 ऐसी वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप ही डाउनलोड कर सकते हैं। zlibrary.com, 12 करोड़ से भी ज्यादा बुक्स अपलोड है यहाँ पे, हर सेकंड में कुछ नई बुक्स अपलोड होती हैं यहाँ पे। openlibrary.com, 20 लाख से भी ज्यादा बुक्स अपलोड है यहाँ पे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ पाए और नॉलेज इंक्रीज हो। पता है, मैच चाहे क्रिकेट वाली हो या जिंदगी वाली, बाउंड्रीज दोनों में ही जरूरी है। दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि क्रिकेट मैच में जब बाउंड्री बनती है ना तो हम सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बात रिश्तों में बाउंड्री बनाने की आती है ना, हम सब आउट हो जाते हैं। जब इंसान मुश्किलों से गुजर रहा होता है ना, तो वो पॉजिटिव साइड या ब्राइट साइड नहीं देखना चाहता, वो बस ये देखना चाहता है कि उसकी साइड कौन है। चाहे आप कुछ भी ना कर पाए उनके लिए, लेकिन साथ होना, बस साथ होने से बहुत फर्क पड़ता है। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। Life is a journey between 2 alphabets, B and D, where B stands for birth and D stands for death. As simple as that. What's life? A journey between these 2 points, BD, segment BD. अभी segment को ना तो छोटा कर सकते हैं ना बड़ा कर सकते हैं. Both are out of control. What is in control is between the alphabets B and D is an alphabet called C, and that C is choice. We can all learn to choose. As we live our lives, we can all learn to choose not to prove, but to improve. We can all learn to choose not to react, but to respond. We can all learn to choose how not to get affected by what's happening in our lives all around us, and it does. हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना, तो जिंदगी भर मायूस रहेंगे। ओके। और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश रह पाएंगे। और फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, अपने बॉस हो, उनसे प्यार कर पाएंगे जैसे भी वो हो। नहीं तो बस यू रिमोट दबा रहे हैं जी लोग। दुनिया के हाथ में, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल अपनी जज्बातों का मत दो। धीरे धीरे वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। वाइफ का कॉल आया, कह रही थी कि आज उसे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो बाहर से खाना पैक करवा के लिया। मैं बड़ा खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ, खाना पैक करवा के लेकर गया। अब हम खाना खाने बैठे, उसने मुश्किल से एक ब्रेड खाया और कहा कि मेरा हो गया, और मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार तुमको अगर खाना ही नहीं था तो बाहर से मंगवाया क्यों, राइट। अब इस बात पे झगड़ा हो गया। पर ये एक परिस्थिति है, ऐसी कई सारी सिचुएशन आए दिन घर में होती रहती है जब एक इनकंसिस्टेंसी उसके बिहेवियर में हम देखते हैं। दरअसल हम इतने एजुकेटेड तो हैं कि पीरियड्स के दौरान एक फीमेल जो है उसके साथ कई तरह के बदलाव होते हैं, पर इस फेज को कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, कि पीरियड्स के 3-4 दिन पहले से ही उसके साथ कई सारा टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, अभी भूख लग रही है, थोड़ी देर बाद नहीं लग रही है, बात करते करते रोने लग गए, अच्छे खुश हैं और एकदम शांत हो गए, चेंज इन लिबिडो, पुअर कंसंट्रेशन, ये सब होता है। फिजिकली भी उनको जॉइंट और मसल पेन, हेडेक, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन के दौरान भी इनकंसिस्टेंसी उनके बिहेवियर में रहती है और वो इस तरह की चीज़ें कर सकती है। बस ये हमारे जान लेना इसलिए ज़रूरी था कि ऐसा हमारे घर में मम्मी, सिस्टर या वाइफ किसी के भी साथ हो सकता है। बस अगर हमें ये पता है तो शायद हम सिचुएशन संभाल लेंगे, और नहीं तो हम लड़ लेंगे। Paytm is no longer a Chinese company. Its founder Vijay Shekhar Sharma is now the biggest shareholder of the company after buying a 10.3% stake from Chinese company Antfin. Alibaba Group was the largest shareholder in Paytm since 2015, controlling 40% of the company at that time. But as relations between India and China deteriorated in 2020, the Indian government started cracking down on Chinese investments in the country. Paytm was punished as well. The government blocked its multiple licenses like payment aggregator and a small finance bank license. This forced the company to restructure its ownership pattern. And now Vijay Shekhar Sharma with around 19.42% is the biggest shareholder. And the public seems to be liking it as well. The company's share price is up 11% in one day. Let me know your thoughts on this in comments down below. एक नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणून एक बॉडी आहे गव्हर्नमेंटची, अपस्किलिंग ऑफ यूथसाठी, आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। हे सगळे कोर्सेस सर्टिफाईड असतात, त्यांचं तुम्ही कंप्लीट केलं ते कोर्सेस एकदा तुम्हाला भारत सरकारांचं एक सर्टिफिकेट भेटतो, ह्यांनी हे कोर्स कंप्लीट केलाय आणि ह्या पर्सेंटेज ऑफ मार्काचे कंप्लीट केलाय। माझा एक कॉलेजमध्ये मित्र होता, तो एका मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी फर्म सोबत काम करायचा, तर तो मला म्हणाला की
की ते मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी फर्म आता गव्हर्नमेंट सोबत काम करणार इन ॲडवायझरी रोल. मग तो म्हणाला की मला त्याचे जायचं आहे, पण कसं जायचं ते मला कळत नाही. मग मी त्याला सांगितलं की असा कोडिंगचे क्लासेस आहेत NSDCच्या साईटवर. मग तो गेला, त्यांनी तो कोर्स केला. आता तो 3 प्रदेशाच्या गव्हर्नमेंट सोबत तो काम करतोय, ते गव्हर्नमेंट ॲडवायझरी रोल म्हणून, आणि तो पॉलिसीज डेव्हलप करतोय त्या प्रदेशांच्या युवांसाठी. मग इतकं इम्पॅक्ट आपण आणू शकतात. फक्त हे की आपल्याला पण थोडी मेहनत करायला लागेल. Paytm is no longer a Chinese company. Its founder Vijay Shekhar Sharma is now the biggest shareholder of the company after buying a 10.3% stake from Chinese company Antfin. Alibaba Group was the largest shareholder in Paytm since 2015, controlling 40% of the company at that time. But as relations between India and China deteriorated in 2020, the Indian government started cracking down on Chinese investments in the country. Paytm was punished as well. The government blocked its multiple licenses like payment aggregator and a small finance bank license. This forced the company to restructure its ownership pattern. And now Vijay Shekhar Sharma with around 19.42% is the biggest shareholder, and the public seems to be liking it as well. The company's share price is up 11% in one day. Let me know your thoughts on this in comments down below. If your age is between 20 to 55, you should know this. Number 1. Take care of your body. Remember, health is another form of wealth. Number 2. Normalize walking some paths alone because goals are personal. Number 3. Don't waste your energy on fear. Use your energy to believe, learn, create, and grow. Number 4. If you want to be happy, always have zero expectations of others. Number 5. You won't be young forever. Do what makes you happy every day. Number 6. Don't try to change anyone. Change how you deal with them. Number 7. Be mature enough to control your emotions. Learn to react less. Number 8. Free yourself from society's advice. Most of them have no idea what they're doing. Money attracts women, absolutely, but it attracts disloyal women. Money only attracts disloyal women. If you're an old man with lots of money and you're overweight and this, that, and the other, but you're getting lots of girls, you're not getting girls. You're getting girls, you're getting investors, people who want to get money out of you. That's what you're getting. But money only attracts emotionally unavailable women. But looks, or even like character or charisma or comedy, all of these things actually attracts connection. 7 things that will ruin you from inside. Number 1. Regret over the past steals the joy of the present moment. Number 2. Comparing yourself to others breeds discontent and robs you of happiness. Number 3. Unresolved anger slowly poisons the soul, consuming inner peace. Number 4. Negative self-talk suffocates the seeds of self-confidence and growth. Number 5. Surrounding yourself with toxic people erodes your own positivity and well-being. Number 6. Constantly seeking validation from others diminishes your self-worth. Number 7. Carrying the weight of resentment corrodes your heart, hindering forgiveness and healing. How to win anyone in your life. If someone insults you, pause for a second and look at them and say, "Are you okay?" If you think someone is lying, look at their eyes and don't say anything. If you're in an argument, keep your voice calm. It'll give them the impression that you're winning the argument. Good posture increases confidence. Spread your body out and takes up more space. It'll lead to increased confidence. Your eyes dilate when talking to a person you love. Don't put too much trust in friends. Learn how to use enemies. Never hate your enemies. It affects your judgment. Win through your actions, never through your arguments. Prove your point with action. Emotional arguments solve nothing. Be about that action. People who left India and gone elsewhere. And why? Because the environment here didn't support them. I grew up in an environment where if you had an idea, your boss or your manager politely told you, and sometimes not so politely, that you need to gain some experience before you open your mouth. You need to roll up your sleeves and spend 5 years on the shop floor. Then you can talk. And that's not what enterprise is today. Enterprise today is an ability of someone who may be in his 20s, who has a good idea, and he needs to find a way to implement them. 6 lessons that people often learn too late in life. Number 1. Take care of your physical and mental health. They are the foundation of a fulfilling life. Number 2. Follow your passions and dreams. Don't let fear or societal expectations hold you back. Number 3. Forgive and let go. Holding on to grudges only weighs you down. Number 4. Prioritize experiences over possessions. Memories are the true richness of life. Number 5. Embrace vulnerability. True connections and growth come from opening your heart. Number 6. Cherish the present moment, for time moves swiftly and waits for no one. 8 hard truths to life everyone must know. Number 1. Struggles sculpt your strength. Embrace them as lessons. Number 2. You can't control everything. Find peace in surrender. Number 3.
In vulnerability lies connection. Open your heart to others. Number 4, change is constant. Let go and flow with life's river. Number 5, loss is painful, but it reminds us to cherish every moment. Number 6, failure is a stepping stone to growth. Don't fear it. Number 7, time is precious. Invest it wisely in what truly matters. Number 8, expectations often disappoint. Find joy in the present. 7 things that change your life in 1 year. Number 1, believe in yourself and all that you are capable of. Number 2, embrace self-confidence and watch your potential soar. Number 3, when you believe in yourself, anything is possible. Number 4, don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Number 5, your time is limited. Don't waste it living someone else's life. Number 6, life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Number 7, trust your instincts. They are guiding you for a reason. Your mind has to be stronger than your feelings. Think about every poor decision you've made in your life. There was more emotion that was involved in it than there was mind. Every single one of them. Think about it. Your feelings keep you in bed. Your mind tells you, get up. Just try this one simple sadhana in your life, all of you. Whatever conclusions you have about yourself, about the people around you, about the situations around you, just give it up tonight. Tomorrow morning, just wake up and look at everything fresh. Just do this every day, at least see if you can maintain this for the first 1 hour after you're awake. You will see it will take lots of work. You understand? It'll take lots of work, 24 hours of the day, to look at everything fresh. If you're looking at everything fresh, you will not miss a single possibility. Everything is alive to you. Where people see nothing, you will see all kinds of things. Where people see problems, you will see possibilities in life. If you sit alone for 3 days, no television, no book, no texting, simply by yourself, let's see what happens. You must know the nature of who you are. You should not go on dodging yourself and one day you will explode into something. You must know what is the level of madness you're suffering. When I say madness, if your mind is out of your control, is that called madness in definition? Hello? If your mind does not take instructions from you, it's out of control, is that called madness? Just try. And just go sit quietly in your room. Just see what all your mind does. You decide, don't tell anybody. You decide what is the level of madness you're going through. With this, if you enter the world, what will you create? You will only create who you are, isn't it? I want to tell you, there is no such thing as good habit and bad habit. Habit means you are functioning unconsciously. If you're functioning unconsciously, that's a bad thing because that is the beauty of being human, that we can do everything consciously. What an animal does unconsciously, we can do the same thing consciously. Everything that we can do it consciously. The moment we do something consciously, suddenly that human being looks very refined and wonderful. Just because somebody walks and speaks consciously, doesn't he become a beautiful human being? Yes or no? That's all. So why is it that we're trying to develop habits as if there's a good thing? Habit means fixed realities, where you don't have to think. You get up in the morning and it'll happen to you. No, don't try to automize your life. That is not efficiency, that is the efficiency of the machine. This one is supposed to function intelligently and consciously.